Now, the next topic is relationship between J, sigma and E. You all are familiar about the symbols. J is current density. Sigma is conductivity. Conductivity is the reciprocal of resistivity. E is electric field. For an electron, charge Q is equal to minus small e. Small e is the charge on an electron, and on electron the charge is negative, so we take Q is equal to minus E. We have already done drift velocity Vd is equal to E tau upon m. Here charge is negative, minus small e capital E tau upon m. We have already done current density J is equal to NQVD. इस तो पहली वाली वीडियो च मैं डेरिवेशन करके भेजी है. Q की जगह ते माइनस ई पुट कर दो, VD की जगह ते माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन m. You will get J is equal to NE square tau E upon m. ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ρ is equal to m upon NE square tau. ये तो ऑपोजिट वो है, रिवर्स है, रेसिप्रोकल है. मीन्स J is equal to 1 by rho into E. 1 by rho is conductivity, means J is equal to sigma E. If you have any doubts, beta please message me and do your work seriously. पता नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, पर तुसी अपना काम सीरियसली करो. बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज यू विल बी द सफरर. प्लीज डू योर वर्क सीरियसली. नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर. इन एनी कंडक्टर collisions are the basic cause of resistance. See the underline lines. Larger the number of collisions, smaller is the relaxation time. You know that tau is the time interval between two successive collisions. अगर collisions जल्दी जल्दी होंगे मतलब उन्हां च टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा है. जे टाउ छोटा है, रो दा की एक्सप्रेशन है m upon n e square tau. Tau रो is inversely proportional to tau. Smaller is the tau, larger will be the resistivity. Now these number of collisions that depend upon the arrangement of the atoms. So resistance depends upon the nature of the material of the conductor. There are other factors, that is length, area. We have already done about this. Just go through these two questions, question number 22 and 23. Just read once. Next topic is temperature dependence of resistivity. ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ. ਨੰਬਰ 1 ਮੈਟਲਸ. ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ ਫॉर conductors, metals, when the temperature increases, electrons will gain energy. Electron collide more frequently with the metal ions, means number of collisions increases. We know that rho inversely proportional to tau. If tau increases, if tau decreases, resistivity increases. Or you can say that conductivity decreases with increase in temperature. बच्चे जे ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲੀਜਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ. ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲੀਜਨਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਟਾਓ ਘਟ ਜਾਏਗਾ. ਟਾਓ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਰੋ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ. ਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ. ਮਤਲਬ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ. ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ. ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ. ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ, ਏਰੀਆ, ਵੋਲੀਅਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸੇਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ. ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਨॉट
रो की है टेम्परेचर, रो इज़ द resistivity at any temperature T. Rho naught is the resistivity at any lower temperature. 1 plus alpha. Alpha is the temperature coefficient. T minus T naught is delta T, that is change in temperature. Rho is equal to rho naught within a bracket 1 plus alpha delta T. इथों टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला कर लिया. इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट रजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. उपर वाले एक्सप्रैशन नू मॉडिफाई करके लिखा होया है. यदि उपर दी ब्रैकेट खोल दो, टी माइनस टी नॉट की जगह पर डी टी लिख दो या डेल्टा टी लिख दो. अल्फा फाइंड आउट कर लो. जो फिर भी तुहानू नहीं पता चल रहा मैसेज कर देना, मैं तुहानू प्रॉपर सॉल्व करके भेज दांगी. टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट. रो माइनस रो नॉट मीन्स इंक्रीज इन रजिस्टिविटी अपॉन रो नॉट पर यूनिट रजिस्टिविटी अपॉन टी माइनस टी नॉट पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. इट्स SI यूनिट इज डिग्री सेल्सियस -1 या पर डिग्री सेल्सियस. रिमेंबर दिस पॉइंट. For metals, alpha is positive. ग्राफ देखो बच्चे, जिहड़ा A पार्ट ग्राफ है दैट इज़ फॉर कॉपर मीन्स फॉर मैटल्स. B पार्ट ग्राफ इज़ फॉर अलॉयज. ये एक ध्यान रखना है, A पार्ट ग्राफ नूं इन्हां ने 0 तो स्टार्ट किया होया है. कदी भी मैटल की किसी भी चीज़ की रजिस्टिविटी 0 नहीं हुंदी. इहनूं मॉडिफाई स्टूडेंट्स देखो, इन्हू मॉडिफाई करके ड्रॉ किया. 0 तो थोड़ा जिहा उपरों स्टार्ट करना ग्राफ नू. अगर तुसी 0 तो स्टार्ट कर देंगे हो बोर्ड एग्जाम से इहदा कोई क्रेडिट नहीं मिलता. अगर जनरल तुहानू मैटल्स वास्ते आंदा, Y एक्सिस वाल लो रजिस्टिविटी, X एक्सिस वाल टेम्परेचर, then draw the shape of the graph. Here they take the example of copper, that is metal. B part graph is for nichrome, that is for alloys. अलॉयज की रजिस्टिविटी नू टैंपरेचर नाल कोई खास फर्क नहीं पैंदा. दे हैज़ वीक टैंपरेचर डिपेंडेंस. मैं लाइन्स अंडरलाइन कीतियां जिहड़ियां इंपॉर्टेंट है, इन्हां नू तुसी अच्छी तरह करना है. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T. नेक्स्ट इज फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. In case of semiconductors, there is no effect on relaxation time with temperature, but the number density increases exponentially with increase in temperature. Means when you increase the temperature of semiconductor, the number of free electron increases exponentially. बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं number of free electrons. जे number of free electrons बढ़ जाएंगे मतलब conductivity increases, resistivity decreases. These explanations are very important for board exams. Go through these points. Here Eg is the energy gap. Students, you are well known about valence band and conduction band. Eg is less than 1 eV. Eg is the energy gap. Less than equal to 1 electron volt. EV की full form की है electron volt. Then the resistivity is not very high. That substance is taken as semiconductor. If Eg greater than 1 EV, resistivity is very high, means that substance is taken as insulator. The important point is for semiconductors and insulators, alpha is negative. For metals, alpha is positive. Alpha positive का की मतलब है direct relationship. With increase in temperature, resistivity increases. Negative का की मतलब है resistivity decreases with temperature. This is a graph for a semiconductor. When the temperature is low, rho is very high. As the temperature increases, resistivity decreases. Next is for electrolytes. Electrolytes, they are liquid form. They are in liquid form. When the temperature increases,
the attraction between solute, solvent, decreases, means ions move more freely. If the ions move more freely, means conductivity increases, resistivity decreases. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਲੋਇਜ਼ ਮੈਂਗਨੀਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟਨ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਮੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ 에ਅਰ ਮੋਇਸਚਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅਲੋਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂਗਨੀਨ Constantan. These numericals based upon resistance and temperature are very important. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ NCERT ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ CBSE ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਕਰਕੇ Do all these examples. If you have any doubt you can call me or message me. अगर तुहानू थोड़ा जिहा होर टाइम मिलता वैसे तुहाडे कोल बहुत टाइम है तो अनसॉल्वड क्वेश्चंस भी करना